everything is still going sideways. There is no major movement, no major hype in the market so far. But some institutional investors are talking about cryptocurrency. We know who are the institutional investors and who are the retail investors. Retail investors like us, like who come to the market with $1,000, $2,000, but institutional market who actually have capacity to fund $1 billion into crypto market. So those are institutional market, and it seems like they are recently talking about cryptocurrencies. On the other side, analysts are saying कि रशिया के लिए only bypassing payment or making payment with cryptocurrency is not going to be the enough to bypass their sanction. But there is a talk in the market कि मॉस्को ट्रेडिंग सेंटर, जो कि रशियन ट्रेडिंग सेंटर है, जो कि कुछ दिन पहले हर जगह से, हर कॉर्नर से कोलैप्स हो चुका है बिकॉज ऑफ देयर recent movement on the geopolitical market. There is a talk like they are going to be, the Moscow trading center is going to be the one of the biggest cryptocurrency trading center in the world. Still, इसका कोई भी data officially released नहीं हुआ है, but this is a talk in the market कि रशिया का trading center, the Moscow trading center is going to be the biggest cryptocurrency trading center, like the country-based cryptocurrency, like we have the BSE, Bombay Stock Exchange, we have the National Stock Exchange. The same way, रशिया का जो Moscow trading center है, that is going to be the cryptocurrency trading exchange. This is huge. So on the other side, Australia is going to be, it seems like Australia is going to be the biggest, largest hub for cryptocurrency adaptation. So बहुत सारे बातें होंगे इस वीडियो में. Before that, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. I hope you have watched yesterday's videos. It was very important. So before I go forward, let's smash into the like button to a new all-time high. Subscribe this channel to stay profitable, stay updated every single day. So let's get forward with today's stories. Apollo Finance. It's a Australia-based financing company. By their survey, they can feel that Australia ka already the market involvement is about 4.2 million. They expect in next 12 months around 1 million can join the cryptocurrency wave. साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, दे आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू मेक देयर एंट्री. एंड ऑल्सो देयर इज अ वर्ड, देयर इज अ लाइन कि कोई भी फर्स्ट नहीं होना चाहता है, क्योंकि फर्स्ट होना मतलब इट्स योर करियर रिस्क. अगेन यू कैन बी नोन एज द फर्स्ट मूवर, बट ऑल्सो देयर इज अ करियर रिस्क इफ थिंग्स गोज साउथ. तो फर्स्ट मूवर मीन्स अभी तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का वैसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है मार्केट पे. कुछ सुनाई दिया है लाइक JP Morgan, देन आवर ब्लैक रॉक्स, ये सब छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर चुका है. Like BlackRock invested through Coinbase. They haven't invested directly in the market like the way they invest in any other sectors. So in this way, जब ऐसे big players market पे directly involve होना start करेगा, ये sentiment रातों रात change हो जाएगा. साथ ही साथ जब ये market ऊपर जाना start करेगा, then nobody wants to missing out the hype. तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज है. अगर एक बार एक टाइम पे कोई एक बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट पे इन्वेस्ट कर दिया, देन दैट वुड बी, उसको बोलते हैं ना आग का चिंगारी, दैट वुड बी द चिंगारी. देन द रियल फायर विल अबाउट टू ब्रेक आउट. So it's going to be massive. So as say so far, there are very like 1 or 2% investment done by institutional investors compared to their potential. So they are Apollo investors, Apollo Capital. They are actually expecting by next year, second quarter onwards, there will be massive institutional investors involvement going to happen in the market, and this is going to be a bigger change in the market. साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारे banks, they are eagerly waiting for market to flip and start their operation into cryptocurrencies. So far, meanwhile, Hong Kong का HSB बैंक वो अपना cryptocurrency related जो भी major operations है, जो भी major इन लोगों का projects है, those are running very smoothly. Market का ये हालत होने के बावजूद भी they are running their cryptocurrency related projects very smoothly, and it is going to grow. It's not going to stop anymore. It's going to grow in next few months to years. So all these big institutions are slowly coming in the crypto space, and that is great news for all the cryptocurrency market. But one of the biggest satisfied news
इंटरपोल से रेड अलर्ट जारी हुआ है डू क्वान के नाम पे। इंटरपोल मतलब बड़े बड़े क्रिमिनल के नाम पे उधर से रेड अलर्ट होता है, जो लोग कंट्री से कंट्री ट्रैवल करते रहते हैं रातों रात ताकि कोई पुलिस उसे पकड़ ना पाए। नाउ इंटरपोल हैज रेज्ड अ रेड अलर्ट। इसका मतलब कोई भी कंट्री का पुलिस इसको रातों रात कहीं से भी उठा सकता है। They don't need any special unit to get this operation done. कोई भी कंट्री का हो, कोई भी कंट्री का किसी भी कॉर्नर का पुलिस हो, they can arrest Do Kwon anytime from anywhere. So that is a huge move by US government. सबसे पहले साउथ कोरिया ने जब ये अरेस्ट वारंट जारी किया था, उसका ठीक मतलब एक हफ्ते के बीच में ही, जब डू क्वान कभी सिंगापुर तो कभी इराक तो कभी ईरान ऐसे घूम रहा है, तो फाइनली टू हैंडल दिस सिचुएशन इंटरपोल ने इसका रेड अलर्ट जारी कर दिया है एंड इट विल बी जस्ट नंबर ऑफ डेज ये वाला न्यूज मार्केट पे आ जाएगा कि डू क्वान हैज बीन अरेस्टेड सक्सेसफुली बाय दिस पुलिस। So it's going to be huge and ये आने वाले टाइम के लिए बहुत ही बड़ा एक कहानी बनने जा रहा है, जिसके चलते मार्केट भी बहुत सेफ एंड सिक्योर मूव करेगा। Now coming to the chart story, not a single movement made by this recent market structure, but it seems like I have a feeling अगर ये अभी ड्रॉप नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ये अभी ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि इट इज नाइदर क्लोज टू एनी रिजेक्शन पॉइंट और नॉर क्लोज टू एनी पंप और लाइक सपोर्ट पॉइंट। ऐसा कोई भी मूवमेंट पे नहीं है। ऐसा बोला जा सकता है कि दिस टाइम द प्राइस इज इन नोवेयर। सो इधर एंट्री करना मतलब कहाँ पे जाएगा किसी को नहीं पता है। सो व्हाट आई बिलीव देयर इज अ फीलिंग कि मार्केट शायद थोड़ा सा ये मूवमेंट दिखाते दिखाते साइडवेज ही होगा नेक्स्ट फॉर लेट्स से वन मोर वीक। बाय नेक्स्ट सैटरडे संडे और मंडे आई थिंक ये वाला जो रिजेक्शन पॉइंट कार्वो के नीचे की तरफ आ रहा है, आई थिंक दैट विल बी द ड्रॉपिंग पॉइंट, दैट विल बी द मेल्टिंग पॉइंट फॉर द बिटकॉइन. If there is not any major move made by the market in this ongoing week, then मुझे यही एक possibilities दिखाई देता है. The market will move sideways and eventually it will get rejected by this curve around 18,000 somewhere or 19,000 and it will eventually drop to 14, 13 or maybe $15,000. So that's it from my side, guys. Thank you for watching. Thank you for subscribing this channel. If you have liked this video, it's time to share this video with your friends and family. Be a part of our Twitter handle. इसका link video description पे मिल जाएगा. बहुत जल्दी मिलते हैं next update के साथ. Till then, take care. Dave signing off.